He comes from a lineage of great sages, yogis, and saints from India. He began his spiritual journey at the age of 7 and was fully realized by the age of 14. During this time, he delved into different practices and acquired mastery over Tantra, Mantra, Yantra, Aghori practices, and Yaksha sadhana. He was a siddha, and many masters, saints, and sages used to visit him in solitude to gain wisdom and guidance from him since the tender age. Although he has been helping humanity since childhood, he never disclosed this part of him to the world, and only the advanced yogis and masters were aware of his divine presence. Only in the last 2 years he chose few people from the world and started guiding them in their spiritual paths, and those who have been closely associated with him have witnessed many miracles in his presence. Despite being a family person, he is a yogi and intends to help people entangled in this world achieve Jivan Mukti, liberation while being alive. He is truly in the world but not of the world, and if you really want to understand him, look him beyond his physical appearance and just sit with him, and you will never be the same again. In his presence you will transcend your body and mind and experience the state of Sat, absolute truth, Chit, pure consciousness, Ananda, eternal bliss. Let us fold our hands in front of his divinity and with a heart filled with gratitude and love welcome our spiritual guru, the realized soul, and our enlightened master, Guru Meenakshi Mishra. जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयन्ती देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रै नमोस्तुते। ओम श्री दुर्गा देवी परादेवी सर्वशक्ति समन्विता कृपा दृष्टि करे देवी सर्वहित प्रदायनी। ओम पृथ्वी शांति अंतरिक्ष शांति सर्वं शांति। अहम ब्रह्मास्मि। Good morning, everyone. Okay. I hope my voice is clear. Okay. So good morning to the people from this side, and good evening to the part of the people from the other side of the world. So this day, I believe, like we must have celebrated Diwali, and I believe it must have been good and may it bring light to your life. And today, this satsang, as you know, the name that we have selected, आज जिस सत्संग का नाम हमने चूज किया है, it's quite heartwarming कह सकते हो आप उसके, the mystical love of the goddess, आदि शक्ति। ना ऐसा कोई
हो ही नहीं सकता. Means anyone who has walked on the path of spirituality, and if they listen to these words and they don't feel the connectivity, this cannot happen. ये हो ही नहीं सकता. वो चाहे आप किसी के रूप में भी जा सको, because the word mother itself has so much of connectivity to each and every one of us. That word itself stirs a million thoughts within our own selves. It creates a ripple of emotions, starting from my childhood to your childhood, from the every aspect of life to the creation itself. That word itself speaks a million words. Just like the three words M-A-A that we call as Ma. And I see like all the Brahma, Vishnu and Mahesh are also the part of the same three worlds. And the entirety of this creation, Sat, Raj, Tam, they are also the same three things. And I believe, like when we go deep into like the talks about her, देवी की बातें जब हम सुनेंगे अभी, I am quite assured that गंगा जमुना बहने वाली है. The reason behind that is we have so many things going around in this life, so many uh, situations that come up every single day. At times we are absolutely in faith, and the other very times we move, we shake in the face of situations. Things happen, things don't happen. Things happen per our wish, things don't happen per our wish. And in order to see all those things, especially when people look at the different swarupas of the Devi, one way she is creating, the other way she is giving knowledge, and in the other way she is destroying everything. So when things are happening in your life, would it not be the Leela of the goddess itself? When things are happening as per you, it must be the Leela of the goddess as well. We accept both of this. But when things don't happen for our wish, in that time, it is difficult to digest. You see, that's why Kali looks so dreadful. Lakshmi looks so Saumya in the craze, and Saraswati absolutely blissful. The reason could be the same thing. When I look at all these three things, I said, so whenever you are giving the right kind of knowledge, you are so silent, and we also accept it in the most or the best possible ways. जब आप ज्ञान देती हो तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब तुम वैभव देती हो तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब तू और किसी तरीके के रूप से आती हो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते. इसीलिए संसार को भी देखना, वो लक्ष्मी को तो एक्सेप्ट कर लेगा, सरस्वती को तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन काली को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, बिकॉज दैट इज हर रॉ वे, द वे शी इज. जस्ट लाइक लुक एट us also. Let us not only talk about the goddess. हमारे बारे में ही सोचो. हम जब प्यार से बात करेंगे सब एक्सेप्ट कर लेते हैं. आप अच्छे बातें करो सब एक्सेप्ट कर ले, लेकिन आपने एक बार अगर सही बात कहने की कोशिश की इन ए स्ट्रॉन्गर टोन, क्या दिस इज नॉट दिस वे, यू आर लुकिंग एट इट इन द रॉन्ग वे, कौन एक्सेप्ट करता है आपको? एंड यू सी, देन यू से यू हैव गॉन मैड, यू हैव गॉन क्रेजी, और यू हैव, आपके बारे में तरह तरह की बातें होने लगती है. लुक एट काली, इट्स आल्सो रिप्रेजेंट द सेम काइंड ऑफ एस्पेक्ट ऑफ इट. What does she represent? She represents that she is absolutely outlaw. सारे चीजों को तोड़ देने वाली है. कोई there is no boundary that she will not break, because the one who knows to break the boundaries knows how to be free, or else it is always bounded. But in order to do so, is it easy? It won't be. So when I was thinking about like what to speak, कुछ बोला नहीं जा सकता, बट कोशिश की जा सकती है ना, एक प्रयास है. सो हमारी जो प्रयास रहे,
We'll try to speak in that way. It's not going to be in a very typical way, like as people keep on talking about the goddesses. No, I'm going to speak in a very simplest of the form, in a child way, like. And I think that would bring the right kind of essence into it. और साथ ही साथ, as the time passes after the discussion, like as हम थोड़ा बात करेंगे इसके बारे में, towards the end we will dive deep into the meditative process of it as well, where we will experience the aspects of those three goddesses lying within our own selves. कैसे वो हर समय हर क्षण हमारे अंदर ही उसका नृत्य चल रहा है और हम उसे जान नहीं पाते हैं. We will dive into that kind of meditative space also. So are we all ready? जब मैं कहता हूं कि we are not going to be intellect today, we are going to be childlike. चाहे वो उल्लू ही क्यों ना हो, right? Like acting as an owl of that space. So in order to start that, few time ago, I wrote a very small snippet. एक छोटा सा राइट अप लिखा था हिंदी में. Might be it would set the tone. एक बार हमने लिखा था कि एक गॉर्जियस सी माँ और उसका एक छोटा सा गोल मटोल अघोरी. So look at the concept here. एक गॉर्जियस सी माँ मीन्स एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी माँ को ऐसे देखता है कि दैट शी इज द गॉर्जियस, सबसे सुंदर वही है. और ये क्या है? ये एक छोटा सा अघोरी है, वो भी कैसा? गोल मटोल. सो अगर इस कॉन्सेप्ट को लेके स्टार्ट करते हैं ना, देन यू वुड अंडरस्टैंड लाइक यू कैन एक्चुअली कनेक्ट टू दैट डिविनिटी. सो आई वुड लाइक टू रीड दैट. और आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हो देख सकते हो, चाहे वो आप छोटे से गोल मटोल अघोरी हो या तो क्यूट सी माँ. गोल मटोल प्लम, ठीक है, खा पी के जो गोल मटोल होता है ना, वो गोल मटोल मतलब ऐसे लड्डू जैसे जो होते हैं वो गोल मटोल होता है. बाकी अगर चाहिए तो आभा जी को पूछ लेना, वो बता देंगे गोल मटोल होता क्या है. ठीक है. So that's where the write up goes like एक एक गॉर्जियस सी माँ और उसका क्यूट सा गोल मटोल अघोरी. पूजा करता था वो दुनिया से छिप छिप के चोरी चोरी. ऐसी बंधी माँ के साथ उसकी डोरी, मानो जैसे हो दोनों चांद चकोरी. पुकारा करता था माँ को, मानो जैसे गाता था एक लोरी. पता ना था कोई मंत्र उसे, क्योंकि ज्ञान था उसका कोरी कोरी. रोता बिलकता मानो जैसे हो वो एक पतंग बिना डोरी. और माँ सुना करती थी छुप छुप के उसकी किलकारी. मगर माँ भी तो थी दया करुणा और प्रेम से भरी. सुनकर उसकी पुकार आती थी दौड़ी दौड़ी. और फिर एक दिन अचानक दर्शन दिया और अपना कर अमर कर दी उस क्यूट से गोल मटोल अघोरी की स्टोरी पूरी. एक गॉर्जियस सी माँ और उसका एक छोटा सा क्यूट सा गोल मटोल अघोरी. So in order to understand the concept that we are going to speak now, you have to become like that. आपको भी वो छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा पढ़ना पड़ेगा. Because if people say like no one understands you like your mother, then I would say no one understands the mother like the kid. शायद वो बच्चा कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन उस बच्चे के लिए उसकी माँ ही दुनिया होती है. Is the entire world for that kid. माँ ही प्रथम गुरु है, माँ ही प्रथम दुनिया है और माँ ही प्रथम भगवान है. एंड दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक. समझ तो उनको आता है जो माँ बन चुके हैं, एंड दे रियलाइज दैट व्हाट इट इज ऑल अबाउट. बचपन में कूद फांद करना तो अच्छा लगता था. वी थॉट लाइक व्हाई शी इज लाइक दिस. नाउ व्हेन यू हैव बिकम दैट, तब समझ में आता है कि ये भगवान कितना परेशान किया रहा होगा हमने.
So इसीलिए when I was thinking about like how to put all these things into words, I said, let me not put into any words, let me just speak and whatever comes. और आज here we are you all ready for the process? Because अब से जो मैं बोलने जा रहा हूं, in our Indian tradition or culture, things are spoken in so fluently that even a simple talk becomes a song. आपने अगर कृष्ण की भगवत गीता पढ़ी है या सुनी है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो जो बात तो कर रहा है लेकिन इन ए फॉर्म दैट इट बिकम्स ए सॉन्ग. और मुझे लगता है कि लाइक एक्सप्रेसिंग अ थिंग इन जस्ट वर्ड्स और रादर इन ए सॉन्ग फॉर्म बिकम्स मच इजियर टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प. मैथमेटिक्स याद रहा ना रहा, गाने बिल्कुल याद रह गए. बचपन से मैं यही सोचता था कि काश अगर मैथमेटिक्स गाने जैसे होता. Because since childhood, I don't know, like I might have remembered 15-20,000 songs easily. तब लगता था कि काश ये भी ऐसा होता कि हम दो गाना गा लेते और मैथ्स हो जाता. And not talking about the intelligent people in the room, those who were great at maths. Okay, नहीं सर जो जो हिला रहे हैं उसी से समझ में आ जा रहा है ये सब हमारे कैटेगरी के लोग हैं. और हरि भाई को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वो तो मैथ्स पढ़ाते थे. So let's not go there anyway. So are we all set for this journey? So now you become that small little kid and just experience the magic of that goddess. And I believe that would be a space to relish. So we'll be talking about all the three rupas of the Devi, the Mahakali, Mahalakshmi, and Mahasaraswati. So as you remember, we started with the first statement that I would like to tell. Her love is infinite. Her love is you. उसका प्रेम का कोई सीमा नहीं है और आप ही उसका प्रेम हो. So with this statement, if I begin now, it's up to you whether you listen to me with your open eyes or your closed eyes. All that I want you to do is listen to it with an open heart. चाहे आंख खुली हो या बंद, हृदय खुला होना चाहिए. And that's where the magic will unfold all itself. And then when we do the meditation towards the end, that would mix everything. वो कहते हैं ना जैसे शहद घुल जाना. That would happen. So let me begin. I don't know like how many times I have repeated this the moment I wrote this particular part. Her love is infinite and her love is you. That I don't know, the moment I wrote that, it stirred so many things within me. और जब हम संसार को देखते हैं, in this every particle of this cosmos that we see, in every breath we take, the all-encompassing love of the goddess Adi Shakti pulsates through creation, destruction, and rebirth. चाहे वो पृथ्वी का या तो रचना का कोई भी कण हो या मेरी सांसें, उस देवी का जो प्रेम है वो सब कुछ अपने अंदर धारण किए हुए है, सब कुछ अपने अंदर समाये हुए है. And she is all encompassing of creation, destruction, and rebirth. Whether she takes the form of Mahakali, Mahalakshmi, or Mahasaraswati, her essence is love, working in the most mysterious way. इस तरीके से काम करती है कि कभी कभी मनुष्य का बुद्धि उसे समझ भी नहीं पाता. It always works in mysterious ways to guide us through the life's dance of illusion, Maya. And we, the intelligent human beings, we are lost in the shadows of the worldly pursuit. संसार के कार्यों में ऐसे लिप्त हो जाते हैं
that we often miss her love's profound depth, कि हम उसे कभी समझ भी नहीं पाते. But when we dare to look carefully, her divine hand becomes unmistakable. मतलब जब हम थोड़ी सी भी गहराई से, गहन रूप से उसके बारे में सोचते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि उसका जो कार्य करने का तरीका है वो शायद विभिन्न तरीके से हो सकता है. माइट बी ए वेराइटी ऑफ वेज शी डज इट, बट इट इज अनमिस्टेकेबल. वो गलत हो ही नहीं सकता. हर लव इज नॉट पैसिव. मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है तो प्रेम कर लो. नहीं, हर लव इज नॉट पैसिव. इट इज एब्सोल्युटली दिस वेरी मोमेंट. कभी आएगा कभी जाएगा ऐसा नहीं होता है. इट्स एब्सोल्युटली एवरी मोमेंट. इट्स नॉट पैसिव. इट इज फियर्स, it is nurturing and enlightening all at once. And it is through her endless love that we evolve, break free from illusions, and rise towards our higher selves. But to truly comprehend, अगर सच में उसके बारे में बात किया जाए, her mystical love, उसके प्रेम के बारे में अगर सच में बात करूं, we must dive deep into understanding and embody her spirit. उसको समझने के लिए उसके जैसे बनना पड़ता है, और उसके जैसे बनने के लिए यू हैव टू बिकम ए चाइल्ड. जस्ट लाइक ए बॉय और ए गर्ल हु टेक्स बर्थ इन दिस वर्ल्ड. एक बच्चा जब पैदा होता है, देयर इज नो रिटन थिंग ऑन देयर फोरहेड दैट इट इज गोइंग टू बिकम दिस और दैट. So the only thing that it does is it just grows and then it becomes whatever it has to become. Similarly, in this phase of this satsang today, let us start like a clean slate of that small little kid and let's see what we become. क्योंकि किसी चीज को समझने के लिए आपको उस जैसा बनना पड़ेगा. इफ यू वांट टू नो ए डॉक्टर, यू हैव टू बिकम ए डॉक्टर. अगर वो बन गए तो समझ में आ जाएगा क्या है. राइट? तो सिमिलर वे, अगर इसके बारे में जानना या समझना है तो उसके जैसा बनना पड़ेगा. सो लेट अस फर्स्ट लुक एट द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ हर. कैसे उसका प्रेम छिपा हुआ है. In the void of destruction, she creates. The first word itself. In the void of destruction, she creates. मतलब सब कुछ तोड़ने के पीछे उसका बनाने का कारण है. It is hidden. We won't even see that what is being created when something is destroyed. Mahakali shows that chaos is the birthplace of new beginnings. लेकिन समझ कौन पाता है. We are so lost in the loss that we don't even see the gains. But is it all about gain and loss? Is the question that should be asked about. It's only about profit and loss, then the question should be asked about. And then again, if you go like chaos is the birthplace of new beginnings, what appears as a destruction is in fact the process of cleansing and renewal. When she becomes the Mahalakshmi, in wealth, she teaches detachment. लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं धन प्राप्ति के लिए, लेकिन लक्ष्मी स्वयं सिखाती है कैसे उससे डिटैच रहना. Now you can ask me the question, how is it even possible that she teaches us detachment? Very simple way, she gives. Who can give? The one who is attached to it, can it give? No. The one who is detached can give. So when she is giving, in that form itself, you are learning that she is teaching us detachment. But we never see that aspect of it. हम कहते हैं लक्ष्मी वैभव की देवी है. अरे लक्ष्मी वैभव से
वैभव की देवी तो है लेकिन उससे मुक्त है वो, and she gives it away, and that's how she teaches us the same thing. It's not about hoarding all the things, it's about giving it as well. Mahalakshmi's greatest gift is not wealth, but the wisdom to use it without attachment. लक्ष्मी की पूजा तो करो, लेकिन वो जो सिखाती है वो भी सीखना जरूरी है. That although she gives it, but at the same time she also gives the knowledge. और ऐसे नहीं कि वो हर जगह पे पैसे बिखेर देती है ना. She knows where to. So you should also realize that part. Anyways, we will dive deep into all those things. I'm just touching the base of it. She teaches us that the true wealth is the abundance of the spirit. Because जब हमारी आत्मा जो है, हमारा spirit जो है, if itself is not abundant, can it give? Can it help? Can it take care of anyone? No. So that's the learning, the basic learning of Goddess Mahalakshmi. Then we come to Mahasaraswati. And in that, I would like to say, in this specific way, in silence, she speaks. Mahasaraswati reveals that silence is the language of the divine. It is in the moments of stillness that her love speaks the loudest, guiding us towards enlightenment. Saraswati ज्ञान की देवी है, right? But हमेशा देखना वो, she is in the meditative posture, in the meditative space. What does that indicate? Shiv, he is always in a meditative state. Vishnu is in Yoga Nidra. What does it all indicate? It's all indicating the same thing that I am speaking now. Silence is the language of the divine. And I was talking to someone just a day ago, and I said the same thing. He said, do you really speak to God? People come up with typical questions. They ask the question like, do you really speak to God? I asked, why? You don't? He said, yeah, I speak, but he does not reply. I said, then you have not understood his way of speaking. Then he said, then what does that mean? Then I said, when I speak, he listens. And when he speaks, I am in meditation. जब मैं बात करता हूं तो वो सुन लेता है, लेकिन जब वो बात करता है ना तो मैं ध्यान में उतर जाता हूं. Because that's the language of divinity. When you become silent, when you become still, when you become absolutely inward, अंतर्मुखी हो जाते हो. तो कौन बात करता है आपके साथ? Who is still whispering in the silence because there is no words? There is no one sitting by your side whispering mantras. There is no one by your side speaking, telling you stories. And that's where, even though when there is no one around you, you are absolutely sitting still and you are still looking within you, and still the silence whispering goes on. Who is speaking that? जो निशब्दता से बात कर ले, वो दिव्यता है. That speaks without any words, that's divinity. And that's what is all about Goddess Saraswati. So क्या सीखे तीनों के बारे में? महाकाली का क्या हुआ? In the void of destruction, she creates. Chaos is the birthplace of new beginnings. फिर महालक्ष्मी के साथ क्या सीखे? In wealth, she teaches detachment. How to use, she provides the wisdom to use it without attachment. और महासरस्वती का क्या हो गया? In silence, she speaks. Because silence is the language of the divine. Okay, so when we listen to all these things, this finds so well. Oh wow, wonderful. कितना सुंदर तरीके से बता दिया गया. एक्सेप्ट कर लेते हो क्या?
Do you accept that? Might be sitting here, yes. But in the long run, what happens? We often miss it out. Then the question that comes easily to every one of us, when she is all compassionate, she's all loving, she is also beautiful, she is also graceful, then why we struggle to understand her love? उसका प्रेम को समझ क्यों नहीं पाते? उत्तर आप सबको पता है. You already know the answer. Caught in the web of Maya, we become fixated on the material world, forgetting that behind every experience, whether joy or sorrow, it is Adi Shakti's love guiding us. आप संसार की मोह माया में फंस के आप ये जान भी नहीं पाते और ये भूल भी जाते हो कि हर एक चीज जो हमारे जीवन में घटित होती है तो सबके पीछे उसका प्रेम ही है. But we resist her lessons because we are afraid of change, afraid of letting go. But Adi Shakti's love is always, always, always working in our favor, even when we cannot see it. जब हम उस चीजों को ना देख सकते हैं, ना समझ पाते हैं, ना कुछ जान पाते हैं, फिर भी उसके पीछे का कारण उसका प्रेम ही है. And that's where we should come to a realization. And that realization can only happen through contemplation that what has happened really to me. Her love is the force that breaks us open. ये उसी का प्रेम है जो हमको तोड़ देता है और खोल देता है. Now this is a way, or this is just a simple word to understand at a very deeper meaning. ये वही है जो हमें तोड़ देती है. ना हमारा क्वेश्चन ये आता है कि अरे जब बनाई थी तो तोड़ क्यों दी. There is a famous, not famous, I just heard it. It was so funny that I said, okay, so let me use it. Quite far off from spirituality. तो कहता है, you have to break an egg to create an omelette. अंडे को बिना तोड़े ऑमलेट नहीं बन सकता. कहता एंड हमको बिना तोड़े हमारे अंदर जो छिपी हुई दिव्यता है शायद उसको बाहर नहीं लाया जा सकता है. जैसे एक बीज को तोड़े बिना एक पेड़ को निकाला नहीं जा सकता, शायद उसी तरीके से जब वो हमको तोड़ देती है हम ये सोचते हैं कि अरे टूट गया मैं. दो लाइनें कुछ लिखी थी हमने 2 दिन पहले की बात है. सो आई रोट समथिंग. रोते बिलखते हुए देखा है लोगों को तेरे सामने. रोते बिलखते हुए देखा है लोगों को तेरे सामने. हमें ये बातें समझ नहीं आती कि कि, कि संसार के लिए रोते हैं बैठ के तेरे सामने. व्हाट डज दैट मीन? रोते बिलखते हुए देखा है लोगों को, ये बात हमें समझ नहीं आती कि संसार के लिए रोते हैं बैठ के तेरे सामने. व्हाट डज दैट मीन? दैट सेज सो इंटेंस, a thing of so intense that a person who has literally understood what spirituality is, ये उनको समझ में आएगा कि अरे रो रहे हो बिलक रहे हो, ठीक है, माँ है समझ पाता हूं, तुम उसके सामने रो सकते हो बिलक सकते हो, आई गॉट दैट. लेकिन किस लिए रो रहे हो उसके सामने बैठ के? संसार के लिए उसके सामने बैठ के रो रहे हो जबकि वही पूरा संसार है. एंड दैट्स वेयर आई से, डिड यू रियलाइज दैट ब्यूटी ऑफ दैट? नो वी डोंट. अरे मांगना होता तो राजा को मांग लेते, उसके पर्दे मांग रहे हो, उसका कुर्सी मांग रहे हो. शुड हैव आस्क्ड फॉर हर, isn't it?
A very simple statement, but I think, wow. And you know what will happen now? जब आप बैठ के कभी रोओगे, तब देखना, द डिवाइन विल स्पीक इन साइलेंस. यही शब्द आएंगे फिर. रोते बिलखते हुए देखा है लोगों को, ये बात हमें समझ नहीं आती कि संसार के लिए रोते हो, संसार के लिए रोते हो उसके सामने बैठकर. So let's see how it works for you. Then let's. Her love is the force that breaks us open, shattering our illusions. कि मैं जिस चीज को मानता था कि यही सब कुछ है, वो उसी को तोड़ देती है. And revealing the eternal truth that we are one with her, one with the cosmos, and one with the divine. वो जब सब कुछ तोड़ देती है, तब समझ आता है कि ये सब कुछ एक ही है. Because until you break, the seed won't know that it has the potential to become the tree, and when it becomes the tree, it creates more seeds. तो बताओ, पेड़ में बीज छुपा हुआ है या बीज में पेड़? Is the tree hidden within the seed, or the seed hidden within the tree? Are you hidden in the divinity, or the divinity is hidden within you? ये तो पता तभी चलता है जब बीज टूटता है. ये तो पता तभी चलता है जब पेड़ अपने आप को तोड़ के बीज में परिणत कर देता है. It transforms itself into the seed. Then it realizes the seed was all within it, and when the seed breaks, it knew that the tree was all within it. It's all encompassing. And that's where we say, whether it is breaking as a seed or a tree, you see the act of the divinity walking, acting every single moment of life. Even in your breath. You know, even if you go through the scientific processes, if you understand how science works or how science defines breath, we all know that that fire that is taken within, the air that is consumed through inhalation is oxygen, right? Why do you take oxygen? Now, in order to understand that any fire that has to burn, it needs oxygen, right? तो जब आप सांसें अंदर लेते हो और ऑक्सीजन आपके अंदर जाता है, हमको पता है कि हमारा एक जठराग्नि है. There is a fire that is burning within us. In order to keep that fire burning, it needs oxygen, right? But can you see the fire? That's the invisible fire. इसीलिए उसे भूताग्नि और जठराग्नि कहा जाता है. Because that is invisible. The fire that we see outside can be seen. And can you see your breath is burning things within you? Are you doing the right thing by breathing or not? आपके सांसें लेने से अंदर कुछ जल जा रहा है. अब बताओ, जो सांस आप अंदर ले रहे हो वो अच्छा है बुरा है? कंबशन प्रोसेस ही है ना. सो इज इट राइट और रॉन्ग? अगर रॉन्ग है तो रोक लो, अगर रोक सको तो. वो भी हाथ में नहीं है. That even is not in the control of us. But the only thing is, we have to understand that in every aspect, that's what I said, in every breath of mine, she dances. And where does the air go? Into your lungs, right? And what does it do? It creates that, helps the heart to receive the pumping energy, and it pumps the things, right? यही है ना. सांस अंदर गई, फेफड़ों में सांस गई, और उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने के लिए हार्ट को गया, एंड इट स्टार्टेड pulsating, right? How about understanding this? In every breath, she comes within me and dances in my heart. Will it make sense? आप वही तो कर रहे हो. हर क्षण सांस ले रहे हो और अंदर हृदय धड़क रहा है. What धड़कने का मतलब क्या? It's a rhythmic pattern. And when in a rhythmic pattern it is dancing, can't I say that she is always coming within me and dancing in my heart? ये देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है.
ये सब देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती है. सो कैन यू टेल मी व्हेन यू आर ब्रीदिंग व्हाट इज हैपनिंग? लेते होंगे सांस दूसरे लोग, हमारे लिए तो वो नाचती है. Might be it's for the other people, but for us, it's the dance of the divine within myself. And if you see, like in every breath, in your every heartbeat, she is dancing, how would your life be? And then I believe, like, that's what we should all understand. Her love is infinite. Her love is you. कितने लोग सांस ले चुके होंगे? इनफाइनाइट, राइट? लेकिन कहाँ जाता है? इन योर हार्ट. दैट्स व्हाट आई से. हर लव इज इनफाइनाइट. हर लव इज यू. उसका प्रेम आप हो, इसलिए दौड़ते हुए आती है आपकी तरफ. कहाँ जाती है? आपके हृदय में बस जाती है. ये भी समझना जरूरी है या समझाना जरूरी है? दिस शुड बी अ वेरी बेसिक थिंग्स दैट वी शुड ऑल नो. बट क्या करें, सरल चीजें समझ नहीं आती. और जो समझ नहीं आते उसके पीछे भागते रहते हैं हम. कोई नहीं. सो वी विल culminate all those things. Not to worry. And in the dance of creation and destruction, she is always leading you home to the eternal truth of your divine nature. उसके हर रचना में, हर डिस्ट्रक्शन में वो आपके घर के तरफ ही ले जा रही है. And if you just realize that only one thing, that is always taking me towards the home, then you should be rest assured. कुछ भी हो जाए, I'm going home this time. And that should be the mantra that you should be living along with. And then let's understand why and how I would say that महाकाली का जो प्रेम है वो डिस्ट्रक्शन से आता है. थ्रू द डिस्ट्रक्शन शी वर्क्स, बट एट द सेम टाइम व्हेन ही डिस्ट्रॉयज शी लिबरेट्स. उसकी कुछ कहानी बोलना चाहूंगा जो सबको पता है, वेरी कॉमन स्टोरीज, बट you might not have seen that story in that particular way, might be. जब हम काली को देखते हैं ना, like when we look at her, how dreadful people have made her. Means जितने भयावह, जितने डरावने, जितने भयंकर तरीके से उसको दिखाया जा सकता था ना, उसकी रचना लोगों ने कर दी है. लेकिन उस सारे रूपों के पीछे उसका जो प्रेम है वो कोई नहीं देख पाता. शायद उसको देख के डर जाते होंगे, शायद उसको देख के सोचते होंगे हाँ नहीं नहीं आपकी कहानी अलग हो चुकी है, बिकॉज यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड योर सेल्फ क्वाइट इन ए डिफरेंट वे. सो अभी ये सारी चीजें आपको मायने नहीं रखती. लेकिन अगर नॉर्मल किसी इंसान से बात करो, कितनी भयावह लगती है उनको. बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ शी वर्क्स. महाकाली, rather than I say Mahakali, I should say Mahakali, with her dark, fearsome form, may seem like a force of destruction to the untrained eyes. जिसको पता भी नहीं है उसके बारे में, उसको शायद वो डिस्ट्रक्शन लग सकती है. But let me tell you, she dances upon the battlefield of ego. वो मेरा जो ईगो है ना, उसके ऊपर तांडव करती है. Tearing down all the illusions that I have about this world, myself, and this creation, and obliterating all that obstruct the truth. वो सारे चीजों को काट देती है जो सत्यता को रोकता है. But beneath this veil of terror lies a love so pure, so intense, that it will stop at nothing to ensure the liberation of her children. शायद ये जो भयावह चेहरे का जो पर्दा है, उसके पीछे उसका जो प्रेम है, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो आपको मुक्त ना कर दे. See, I'm talking all this from an aspect of my own way of expressing her.
लेकिन जो कहानी लोग पढ़ते कि रक्त बीज की, उसने she drank the blood of रक्त बीज and after that she was uncontrollable, the demonic powers went into her. मैं कहते कितने मूर्ख हो सकते हैं लोग, कितने मूर्ख हो सकते हैं कि रक्त बीज का खून पीने से वो उत्तेजित हो गई और उसके अंदर वैसे राक्षसी प्रवृत्ति आ गई। अरे वाह, कितनी बुद्धि है तुम्हारी, अपने जैसा समझ रखा है क्या? आई डोंट वांट टू गो देयर, दो चढ़ा दिए और उसके जैसे हो गए, वैसा समझ रखा है क्या उसको? बट let me narrate the story of Rakta Bij. We all know that, but just understand it from the aspect of a mother. We all know that it's very awe inspiring. बहुत रक्त बीज की जब कहानी सुनते हो तो बड़ा अद्भुत कहानी है कि कैसे हो सकता है हर बूंद जो गिरती है उसमें से और एक राक्षस पैदा हो जाता है। इट्स क्वाइट ऑ इंस्पायरिंग, बट इन दिस आई सी द महाकालीज लव इज हर बैटल विद द डीमन रक्त बीज। इवन वो अगर रक्त बीज से लड़ाई कर भी रही है तब भी उसमें उसका प्रेम है। इट्स नॉट टुवर्ड्स रक्त बीज, इट्स टुवर्ड्स यू। एंड नाउ we all know that Rakta Bija, whose every drop of blood when it spills on the floor or the ground, it gives birth to another demon. और ये देख के सारे देवी देवता, they were desperate and they didn't knew how to control this. And in that moment, Kali, with her wild hair, I just want you to experience, like, I just imagine this, like, look at her like a gigantic figure of a goddess with her hair wide open and her eyes blazing like thunder, appeared on the battlefield. Her love for humanity was so profound that she unleashed her terrifying form, not to destroy recklessly, but to save the universe from endless cycles of evil. With each swipe, खड़ग के हर एक प्रहार से, she cut it down into pieces and consumed the blood of the demon before it could touch the ground, ending the regeneration of that demonic power. Her unstoppable fury was not out of anger, but out of a fierce love, determined to protect the cosmos, determined to protect you. She dances the dance of time, tearing down illusions, bringing liberation by destroying the forces that hold us back. Kali does not destroy for the sake of destruction. Rather, her love is ferocious, protective, and unyielding. Like a mother who fiercely guards her child from danger, Mahakali rips apart the falsehoods we cling to, exposing us to the light of higher consciousness. She destroys the false ego, the attachment to temporary pleasures, and all that keeps us bound to the cycle of this suffering. जो सारे चीजें हमको इस जगह पे बांध के रखती है ना, वो सब को तोड़ देती है. And she breaks it out of love for you. Kali teaches us that true love sometimes destroys, not to harm, but to liberate. Just like a mother who must painfully pull her child away from danger, Kali pulls us away from the traps of ego and ignorance, leading us towards ultimate freedom.
Just close your eyes for a moment and just absorb that how much she must be loving you, that she was ready to even drink blood of a demon. If that was not the case, none of us would have been sitting here doing this. None of us would have been breathing. None of us would have been existing. And then, once you have just experienced the glimpse of that goddess, let us move to goddess Mahalakshmi or Mahalakshmi. And as I said, through abundance, she teaches detachment. Lakshmi's love is like the ocean. उसको समुद्र सुता, समुद्र तनया, यही कहा जाता है ना. तो क्योंकि वो समुद्र से प्रभावित, सी appeared from the ocean. I believe like her love is also like the ocean, vast, deep, and ever giving. She nurtures us in ways we cannot always see. When we are open to the blessings, she guides us towards balance, where material abundance coexists with spiritual richness. Yet, even when we turn away, lost in greed and ignorance, she waits patiently, ever ready to bestow her love when we return to her. वो हमको क्या सिखाती है? ये जो लास्ट स्टेटमेंट जो मैंने कहा उसको बड़े ध्यान से सुनना, उसके बाद मैं कुछ समझाऊंगा. Even when we turn away, lost in greed or ignorance, she waits patiently, ever ready to bestow her love when we return to her. When you look at Vishnu, वो जब योग निद्रा में शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी सो सकती थी. Has she? What is she doing? If you look at her, it also speaks of one thing. She is waiting for Vishnu to awake again, means return back. And she is sitting there patiently waiting for his return so that she can pass on her love again to her. Now look at you. योग निद्रा, माया. जब आप माया के निद्रा में सो गए हो, उससे आंख मूंद लिए हो, वो अभी भी आपके पास बैठ के आपका इंतजार कर रही है. She is still waiting for you. Why? So that when you come back, she again bestows her love on you. Can you see how beautifully the simplest of the things have been hidden in such pictures that we never even realize? शिव ध्यान में है, उसका ध्यान दिखाई देता है, आप पिक्चर में देख सकते हो कि ही इज वेटिंग. लेकिन लक्ष्मी का ध्यान कोई नहीं देख पाया. नो वन कुड इवन सी लाइक हाउ पेशेंटली शी इज वेटिंग. वो उसको एक ही चीज पता है, wherever you go you will return back anyways. So she is waiting there quietly. और देखना, पैर दबा दे रही है. What does that mean? She says, you go my child, go play in the world as much as you can. I will give you all the comfort that you need. But in that comfort, don't forget your mother. माँ को नहीं भूलना. If that is just a reminder for all of us, I think then you will realize like how spiritually you can be rich while being abundant in the outer world. संसार में मैं तो कहता हूं इतना पैसा आना चाहिए कि आपको कभी पैसे की जरूरत ही ना पड़े. तब देखना कि मुक्ति क्या होती है पैसे से. क्योंकि the thing that we have in abundance, we don't care about it anymore, right? मैं तो कहता हूं सबके घर में ऐसे ही भर जाए, ताकि दूसरे बार उस चीजों के पीछे कोई भागे ही ना.
So that's where I see her. लोग सिर्फ और विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति देख लेते हैं और मैं बस ऐसे देखता रहता हूँ, कितना पेशेंस है तुझ में, that you're just sitting there waiting. Might be people call me crazy in that way, says क्या क्या देख लेता है बैठ के, तो that's how I am. So let's hear this. There is a story of King Bali, right? आपने सब सुना होगा, जो वामन अवतार जब हुआ था, right? This story we all know, that there was a demon king Mahabali who was granted invincibility, wealth and great power. Yet despite his power, Mahabali remained deeply devoted to Mahalakshmi. वो कभी भी राक्षस था, फिर भी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी महालक्ष्मी का भक्त था. And seeing his unwavering devotion, Vishnu in his form as Vamana tricked Mahabali into surrendering all of his worldly possessions. Despite losing his kingdom and all his wealth, Mahabali remained peacefully, and Lakshmi, pleased with his surrender, blessed him eternally. ये कहानी किसी को पता है नहीं पता ये नहीं जानते. महाबली जो था, बलि, वो देवी का बहुत बड़ा भक्त था. और आपको भी ये पता होना चाहिए कि जब बलि को आके, like when people ask how do you know that she was, say like Bali was actually a devotee of Lakshmi, कहीं mention है क्या? I said through his action it mentions. They said how? I said when Vamana appeared, we all know Sukracharya already knew that it was Narayan, and Sukracharya was trying to stop anyways, that don't give anything. And you know, like when he was taking, like पहले था ना वो कमंडलू से पानी हाथ में लेके, उसके बाद जो भी like they used to take a प्रण लेते थे कि मैं जो बोल दूंगा यही सत्य है, इट वुड हैपन. और हम सबको पता है कि तब जाके व्हाट हैपेंड, शुक्राचार्य सैट लाइक ए स्मॉल लिटिल बीइंग इन दैट फेस ऑफ दैट कमंडलू सो दैट द वाटर डज नॉट फॉल. तो वामन क्या करता है, एक छोटा सा तिनका लेता है, उसको उसके अंदर लगा देता है, एंड दैट्स व्हाई शुक्राचार्य बिकम वन आइड, उसका एक आंख फूट जाता है. सो दैट्स द स्टोरी ऑफ ऑल अबाउट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट महाबली, इवन डाउन साउथ महाबली की तो पूजा होती है, राइट? द नेम इटसेल्फ महाबलीपुरम, फ्रॉम वेयर डज इट एग्जिस्ट? इट कम्स फ्रॉम महाबली, राइट? सो महाबली के बारे में जब हम बात करते हैं, हाउ डू आई नो दैट इट इज ही वाज अ डिवोटी ऑफ लक्ष्मी? आपको समझना चाहिए, मैंने एक स्टेटमेंट कहा था कि लक्ष्मी हमको सिर्फ धन वैभव नहीं देती, उससे मुक्त होने का रास्ता भी बताती है. शी टीचेस अस द पाथवे ऑफ डिटैचमेंट. महाबली को देखो, उसने क्या कहा शुक्राचार्य को, अगर संसार जिसका है वो आके मुझे मांगता है, इफ एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, ही हैज बिकम ए बेगर इन फ्रंट ऑफ मी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और अगर उसे सब चाहिए तो मैं सब दे दूं. एंड दैट्स वेयर व्हाट डिड ही डू? वी ऑल नो, राइट? 3 steps he asked for. 3 steps. One, he measured the entire earth. The second, he measured the entire sky. The third, he said, what to do? He says, my head. लेकिन विष्णु ने उसके सर के ऊपर पैर तो रख दिया. क्या ये छोटी बात है? सोचो, अगर विष्णु ने आपके सर पे पैर रख दिया तो क्या ये छोटी बात है? लोग कहते हैं कि विष्णु ने उसे धसा दिया धरती के अंदर और उसे लेके नरक लोक में रख दिया. लेकिन जिन्होंने विष्णु की कथाएं सुनी है उनको पता है, आज भी महाबली जहां रहता है उसके द्वारपाल बन के आज भी खड़ा है विष्णु. दिस इज द स्टोरी ऑफ डिविनिटी. एक सुंदर कथा कहना चाहता हूं, लाइक माइट बी स्लाइटली डिविएटेड फ्रॉम दिस टॉपिक, बट एक बार की बात है, I was talking to this about someone just a day ago.
वो याद आ गया मुझे। एक बार जो लक्ष्मी है, मैं महालक्ष्मी की बात नहीं कर रहा हूं, लक्ष्मी देवी जो है, उन्होंने त्रिपुर सुंदरी और त्रिपुर भैरवी की साधना की, मतलब आदि शक्ति की साधना। जब लक्ष्मी ने साधना की त्रिपुर भैरवी की, त्रिपुर सुंदरी की, जब वो प्रकट हुई उसके सामने, लक्ष्मी उनको देख के इतनी मोहित हो गई, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मांगी। वो कहती कि यू जस्ट यू जस्ट मेल्ट मी विद इन यू, मतलब मुझे अपने अंदर समाहित कर लो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एनीथिंग, यू जस्ट मर्ज मी विद इन यू। एंड इन दैट मोमेंट त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, वो कहती है कि देख, अगर तुझे मैं अपने अंदर समाहित कर दूं तो ये संसार का वैभव लुट जाएगा, इस संसार में अस्थिरता आ जाएगी, तो मैं तुझे अपने अंदर समाहित नहीं कर सकती। तो लक्ष्मी थोड़ी दुखी हुई कि क्या मेरी साधना सही नहीं थी कि मैं तुम में समा सकूं। तब त्रिपुर भैरवी सुंदरी हंसती है और कहती है, तू मेरे अंदर समाहित नहीं हो सकती क्योंकि देयर विल बी अ डिसबैलेंस, लेकिन मैं तो तेरे अंदर समाहित हो सकती हूं ना। दैट्स डिवाइन लव। आप जब भगवान को बुलाते हो ना, आप कहते हो प्रभु बहुत हो गया, संभाले मुझे अपने अंदर, वो कहते तेरा काम खत्म नहीं हुआ, योर वर्क इज स्टिल पेंडिंग, देयर विल बी अ डिसबैलेंस इफ आई ऑब्जर्व यू राइट नाउ विद इन मी। और तब आप क्या कहते हो, दुखी हो जाते हो, अरे। बट व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉमिस दैट कम्स अलोंग विथ इट? ठीक है, तू मेरे अंदर समाहित नहीं हो सकता, देयर विल बी डिसबैलेंस, लेकिन मैं तुझ में तो समाहित हो सकता हूं ना। नाउ व्हाट हैज हैपेंड टू ऑल ऑफ अस देन? शायद हम अभी भी शरीर में हैं, हम अभी भी संसार में हैं, हम अभी भी दुखी हैं, हम अभी भी पीड़ा में हैं, हम अभी भी कष्ट में हैं, हम अभी भी क्लेश में हैं, हम अभी भी पूरे संसार में डूबे हुए हैं। वी हैव नॉट सबमर्ज्ड इनटू द गॉड, राइट? बट लुक डीप इन योर हार्ट, हैज ही मर्ज्ड इनटू यू और नॉट? एंड आई थिंक दैट्स डिवाइन लव। उसी तरीके से जब विष्णु जी की बात होती है कि बलि को तो उन्होंने पैरों तले रौंद दिया, ये कहते हैं, लेकिन आज तक उसकी सुरक्षा वही करते हैं। दैट्स द लव। अब बताओ, वो उसके द्वारपाल बन के आज तक क्यों खड़े हैं? थिंक अ लिटिल लॉजिकली एंड यू विल गेट द आंसर। मैं कोई पौराणिक बात नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल सरल तरीके से बात करना चाहता हूँ कि विष्णु आज भी उसके सामने द्वारपाल बन के क्यों खड़े हैं। क्यों जानते हो? विष्णु के हृदय में लक्ष्मी रहती है, और लक्ष्मी बलि के पास, क्योंकि बलि उसका भक्त है और भगवान भक्त के साथ है। और अगर भक्त के साथ भगवान खड़ा है और वो भगवान जिसके हृदय में है, वो कहाँ का रहेगा? इट हैज टू बी देयर। सो जस्ट थिंक ऑफ, आइदर यू लव विष्णु और यू लव लक्ष्मी, बोथ ट्रैवल टुगेदर। चाहे आप शिव को देखो या पार्वती को, बोथ ट्रैवल टुगेदर। चाहे आप अपने आप को देखो या उसे, बोथ ट्रैवल टुगेदर, because her love is infinite and her love is you. Ah. So Lakshmi's love is abundant but also transformative. She doesn't just gives wealth to those who desire it. She blesses those who have the wisdom to remain detached from the riches.
Lakshmi's greatest gift is the understanding that true wealth lies not in material accumulation, but in spiritual richness and inner peace. Lakshmi's love is not about granting material wishes alone. लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उसमें वही मांग लेते हैं. But it is about teaching us to flow with abundance without being chained by it. मतलब धन धान्य से परिपूर्ण है लेकिन आप उससे बंधे हुए नहीं हो. You are not chained to that. You are not jailed with it. She shows us that wealth, like life, is a flow. When we cling to it, we block ourselves from receiving more. जब हम अपने आप को बांध देते हैं किसी चीज से, तो उससे आगे बढ़ने का या उससे आगे आने का रास्ता बंद कर देते हैं. So that was about Lakshmi. Then let's move on to goddess Mahasaraswati. Through her wisdom, she awakens creation. In the form of Mahasaraswati, the goddess of knowledge, or Adi Shakti, she reveals herself or her love through the power of wisdom and creativity. Saraswati's love is the kind that awakens the intellect, opens the heart, and gives birth to all forms of art, music, literature. She is the goddess of creation, whispering divine truths into the minds of those who seek higher knowledge. Saraswati's love is gentle, yet it transforms. She teaches us true love is found in understanding, not just the knowledge of the books, but the knowledge of the self. When we tune into her energy, we tap into infinite creative potential that resides within each and every one of us. She shows us that the act of creating, whether it is a song, a painting, a new way of thinking, is an act of divine love. इसीलिए मैं कहता हूं like all the people those who are in the creativity field, when you create something, don't just create out of that I want to create something, but it can be looked into in this way, that the divine has created a beautiful world and has given me the quality of speaking, the quality of drawing, the quality of cooking, the quality of taking care, the quality of singing, the quality of dancing, the quality of painting something, the quality of creating something, the quality of helping someone. All these things, all the things that can be done. It has already created a beautiful world, but it has given all this to me so that I can add beauty to what is already beautiful. जो ऑलरेडी सुंदर है उसको और सुंदर बनाने की कला उसने मुझे दे दी है. Rather than she doing it on her own, she has passed on that energy to me, and now why can't I do it? क्यों ना मैं इसे ले लूं, क्यों ना मैं इसे आगे बढ़ाऊं, क्यों ना मैं इसको और सुंदर बना दूं. So that's how when we look at Goddess Lakshmi, that's what we learn. Saraswati's love, it actually shows that when we are ready to seek higher truth, she is always there to guide us, often in subtle, intuitive ways. Every moment of insight, every spark of creativity is her quiet love whispering through us. जब भी कोई भी क्रिएटिविटी की आइडिया आती है तो समझ लेना सरस्वती आपके कान में बात कर रही है. She is whispering silently into your ears. Let us understand something a little bit further before we jump into the meditative process.
द कॉस्मिक लव बियॉन्ड द वेल, पर्दे के पीछे जो प्रेम छिपा हुआ है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. द सीक्रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन. When we experience any kind of loss or destruction in life, it is often Adi Shakti working to remove the things we no longer need. True love sometimes destroys to rebuild. When a relationship ends or a path closes, Kali is present, making way for something new and higher to unfold. In the subtlety of abundance, Lakshmi does not just work through material wealth, but through the abundance of opportunities, love, and spiritual insight. When we are giving without hesitation, Lakshmi showers blessings, often in unexpected ways. Her love is about learning to trust the universe's flow. The unseen power of wisdom. Saraswati's love often goes unnoticed because it works in silence of our thoughts. But whenever we feel clarity, understanding, or inspiration, we are being touched by Saraswati's energy. It is not just about knowledge from books, it's about the wisdom to understand life itself. So now I summed up all the three things that we have talked till now. But when I speak of love, how can I leave the story of Shiva and Shakti? It would be like completing your meal without the sweets or the desserts. And the sweet lovers know it. So how can we just go along with that? So just let's start from the beginning and then we will jump into Shiva and Shakti. As per us, like the greatest mystery of Adi Shakti is revealed in the story of creation. When there was nothing, when the cosmos was in a state of formless potential, it was Adi Shakti who breathed life into the void. Her dance created the galaxies, the stars, and the world we know. Her essence lies in the fabric of everything. She is the Shakti, energy, that power that powers all existence. सारे रचना के पीछे जिसकी शक्ति है. And yet her love remains hidden in plain sight. सारे रचना के पीछे वही है, सारे रचना को चलायमान वही रखती है, लेकिन दिखाई नहीं देती. She is hiding in plain sight, मतलब सामने है, दिखाई नहीं देती. Let's understand a little bit from our own aspects. You are able to hear what I'm saying. You are able to understand what I'm saying, right? Your ears are working, your mind is working, your heart is working. That's how your emotions and everything is going on within you. You are physically here. That means your physicality is also there. But who is working behind all this? Can you see? Everything is being done, but we don't know. That's what I say. In plain sight, it is hiding. सामने है, दिखाई नहीं दे रहा है. In every aspect of the things, I am able to speak. How I am able to speak if Shakti is not there? अगर आपके पास शक्ति ना हो, क्या आप श्रवण कर सकते हो? क्या आप सुन सकते हो? आपके पास अगर शक्ति ना हो तो क्या आप देख सकते हो? नहीं ना. So who is doing all these things? And that's where my favorite dialogue comes. वो कौन है जो इस शव को शिव बना देती है, और वो कौन है जो इस शव को रोज अपने कंधों पे ऊपर लेके चलती है? इसीलिए उसे कहते हैं सवारूढ़े. सवा के आरूढ़ करता है, मतलब जो शव के ऊपर बैठी है. महाकाली शवारूढ़े. जो काली है, जो शक्ति है, वो शव के ऊपर आरूढ़ है, मतलब उसके ऊपर चलती है वो.
एंड दैट्स वेयर आई से, ये शव को शिव कौन बनाता है और ये शव को चलायमान कौन रखता है? वो कौन है जो इस शव को रोज अपने कंधे के ऊपर डाल के चलती है, जिसके बिना ये शव हो जाएगा? And that energy, that power, that Shakti is roaming every second along with me, as me, and I don't see it. मुझे लगता है वो मेरे साथ चल रही है, लेकिन हम ये नहीं जान सकते मेरे साथ ही नहीं, मैं बन के चल रही है. Because even is it possible for you to even utter that word me without that energy? तो ये जो मैं कह रहा है ये कौन है? जो ये मैं देख रहा है ये कौन है? जो ये मैं सुन रहा है ये कौन है? जो ये मैं कहता ये संसार में मैंने ये कर दिया वो कौन है? कैन यू सी? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, as is here so is there. The energy is not only out there, it's all within me. और अगर वही सब कुछ चलायमान करती है, if that energy is running everything, then tell me who is running you? Who is that? वही है ना? But my question has not ended here. My question comes now. Why? वो अपनी ऊर्जा आप में डाल दी है. She has given all her energy within you. But why? Answer is very simple. Whom do you give? आप किसके ऊपर सर्वस्व निछावर करने को तैयार हो? जिसको आपको प्रेम है. The one who you love beyond measure, you give everything to them. और उसने आपको सब कुछ अपनी शक्तियां दे दी है. बताओ क्यों? क्योंकि वो मुझे बेइंतहा प्यार करती है. Because she loves me so much that she has given her power in every aspect of my every atom of creation and every cell of my body. I vibrate with her energy and I vibrate as her. How do you vibrate? How do you dance? What energy that is running within you? वो कौन सी शक्ति है जो आपके अंदर चलायमान है? वो कौन सी शक्ति है जो नाच रही है आपके अंदर? कैन यू सी? प्लेन साइड में छिपी है, सामने है, दिखाई नहीं देती. जैसे बिल्कुल विद्या सुंदरी जी जैसे सामने है लेकिन दिखाई नहीं देते, अंधेरा करके बैठे. मतलब क्यों? मतलब ऐसे ही है. दैट्स हाउ इट इज, हिडन इन प्लेन साइट. जब हम आपको देखते हैं, मैं कहता हूं भाई दिव्यता आपके अंदर ही है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हो. क्यों? बिकॉज इट इज हाइडिंग. वेयर? इन प्लेन साइड, सामने है लेकिन मैं कभी जान नहीं पाया. अब देखना, जब सांस आपके तरफ आती है तो सोच लेना, देखो कितना प्यार करती है कि इसको चलायमान रखने के लिए सांस भेजती. हृदय चल रहा है, बुद्धि काम कर रही है, सांसें चल रही है, सब कुछ चल रहा है, वो चलायमान रखना चाहती है. लेट इट हर बी. देखो, आई विल टेल अ स्टेटमेंट बट डोंट टेक इट लिटरली. ठीक है? इसको अपने ऊपर ज्यादा भयंकर रूप से मत ले लेना, क्योंकि मेरे कोई कोई शब्द लोग भयंकर रूप से ले लेते हैं अपने ऊपर. मैं ये कहता हूं कि जब तक तुझे इससे प्यार है तब तक सांसें भेजती रहे. जिस दिन इससे प्यार हो जाएगा, सांसें रोक देना. No, you have to understand what I said. Just wait for a moment, digest that word, then you will understand what I said. जब तक इससे, समझ रहे हो, दिस बॉडी, जब तक इससे प्यार है सांसें भेजती रहना. जिस दिन इससे प्यार हो जाएगा, रोक देना. बट आई विल ऑलवेज स्टे इन योर लव. चाहे जब तक सांसें चलती हैं और मैं ये शरीर में हूं तब भी तेरा प्रेम है, और जब ये सांसें रुक जाए तब भी तेरा प्रेम है. I will never be devoid of your love. I will never be away from you. I will never stay
without you. तो क्या कहते हो? And that's what I said. Don't take it literally. But that is something to be taken literally. ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला जाता. इससे बड़ी प्रार्थना हो सकती है कि जब तक तुझे इससे प्रेम है सांसें भेजती रहना, और जिस दिन इससे प्यार हो जाए रोक देना सांसें. Then this body will fall, but I will ascend to you as you. Can you see that love story that goes on? You can say that, Aditi ji. इसीलिए तो मैं कहता हूं कि वो कौन है जो इस शव को शिव बना देती है. That's what I was speaking of. That's where that love is going on. जब हम फिर शिव और शक्ति की बातें करेंगे ना, तब समझ में आएगा ना. So we are going there anyways. So the destruction and creation of the universe are not opposites. They are part of the same cosmic dance, all powered by the love of Adi Shakti. Every ending is a new beginning. Every failure is a step towards success. And now, let's go into a simple way of understanding the mystical love story of Shiva and Shakti. मेरे लिए तो लोग कहते ना, you always tell amazing stories. I said, I say amazing stories, but there is only one profound story. I can tell you a million stories, but there is very good stories, but there is only one profound story. And that story I always tell, that the most profound story is that of the Shiva and the Shakti. Because while Shiva represents pure consciousness, Shakti is the energy that activates and brings the consciousness into motion. अब समझते हैं इस बात को कि जब संसार नहीं बना था, लोग कहते हैं कि शिव को क्यों कहा जाता है कि वो आदि है, अनंत है, जिसका he has not taken birth. How do you say that? और लोग जब कहते हैं कि अच्छा बताओ शक्ति बड़ी या शिव, अब ऐसे लोगों को कोई उत्तर दे तो फिर तर्क देने लगते हैं कि शिव जो है वो तो आदि शक्ति ने प्रकट किया है शिव को, इसलिए शिव है. ठीक है. सो आदि शक्ति बड़ी और शिव छोटे. मैं बोला तेरी छोटी छोटी सोच, तुम अभी भी बैठ के यही तोल मोल के बैठे हो कि कौन बड़ा कौन छोटा. वैसे तुमको क्या मिलने वाला है कौन बड़ा हो गया तो? In that query of balancing, like knowing who is big or small, I am losing my time to realize who I am. But here, let me tell you a beautiful understanding here. जैसे मैंने कहा, ये स्टेटमेंट को फिर से सुनो. Shiva represents pure consciousness. Shakti is the energy that activates and brings this consciousness into motion. कि शिव स्थिर है और शक्ति उसके अंदर उसको चलायमान करती है. यही है ना? दिस इज इट. सो लेट मी टेल यू. जब संसार नहीं था, कुछ भी नहीं था, बचा था क्या जो गर्भ में छिपा था, उस पल को, what do you say? There was nothing but darkness, and from that darkness awakened the smile of the goddess, and then everything came into creation, right? But my question is, before the consciousness, you said there was all stillness, no motion, because Shakti was dormant. Now tell me, where was Shakti dormant? That again comes back to the same story. Shiv आदि है, अनंत है. There is no where it is mentioned कि शिव पैदा हुआ, because Shiva was lying as the stillness
where there was not even a creation. And out of his love appeared Shakti, and Shakti created the motion, and out of that motion, the entire creation came into existence. अब बताओ शिव कहाँ है? जब कुछ भी नहीं था तब भी वही था. हाँ, उसका नाम नहीं था. Might be the name was not there, but who was beyond the name? इसीलिए कहते हैं जो नाम और अक्षर से परे है वो शिव है. Where were you before creation? You were created, I understand that, but where were you before creation? Then you say, when there was no creation, how I could have been created? Aha, I wanted to listen that answer only. जब कुछ भी नहीं था तो कौन था? जब आप नहीं थे तो आप क्या थे? और जब आप नहीं रहोगे तो आप क्या हो जाओगे? तो जो है भी और नहीं भी, और आप हो भी और नहीं भी, तो आप कौन हो? And can you see why Shakti is continuously flowing into you? Because you are the Shiva, her love. Her love is infinite. Her love is you. Now tell me, when I said that statement that her love is you, then tell me what name would you apply to yourself? अपने लिए कौन सा नाम लगाना चाहोगे? Can you see? That's why I say the greatest love story that can ever be told is the story of Shakti and Shiva. It is not that it happened some time ago, it is happening right now. It's not that you have to wait for eons to happen, it is happening right now. It's not that you only do sadhana, then only realize that. No, it's happening right now. और कैसा प्रेम है? प्रेम, वो कहते हैं ना कि प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसे धरती और सूरज का है, कि दोनों कभी मिले नहीं. प्रेम धरती और सूरज का है जो कभी मिले नहीं, लेकिन एक उसके प्रेम में घूमती रहती है और दूसरा उसको अपना सब कुछ देता रहता है, कभी कुछ वापस नहीं लेता. लेकिन देखो इस प्रेम कहानी को, एक दूसरे से कभी मिले नहीं, इसने उसको कुछ दिया नहीं, वो हर पल देता रहता है. इस प्रेम कहानी को देखो, ना इसने कुछ दिया ना उसने कुछ लिया, फिर भी इस प्रेम कहानी के वजह से सारा रोशन हो जाता है संसार. द एंटायर क्रिएशन कम्स इनटू लाइट बिकॉज ऑफ दिस लव स्टोरी. ये एक तरीके की कहानी. तो आप बताओ कि आपके अंदर कैसा प्रेम होगा कि वो भागते हुए आती है. When you are lying dormant, you are asleep. रोज सुबह ये याद कर लेना. Just remember this. When you are lying down asleep, deep sleep, what have you become? फिर वही देखो, जब कुछ भी नहीं था, संसार भी नहीं, तो क्या था? शिव था. शिव सबके जैसा पड़ा हुआ है गहरी निद्रा में. When you awake, what has entered into you? शक्ति, कॉन्शियसनेस. कौन चला रहा है आपको? शक्ति. कौन चल रहा है? शिव. अब बताओ आपका जीवन क्या है? किसका खेल है? Whose dance? Whose drama? Whose dealings? Or rather, who is you? इसीलिए मैं नहीं पूछता तुम कौन हो, पूछना छोड़ दिया है हमने जिस दिन से हमें ये सोचने लगे तुम क्या हो. It's not about who are you, it's about what are you. And then you answer, कैसे बताओ? What am I when I am everything? The moment
You just say these words within yourself. No, I am everything. मैं ही सर्वस्व हूं. अगर एक बार कह के देखना, एंड इफ देर इज नॉट अ रिपल क्रिएटेड विद इन योर हार्ट, तो तब थप्पड़ मार के जाना मुझे. It takes that. That's what I say. If you have that kind of connectivity with that, when you speak of abundance, you speak of yourself. When you speak of scarcity, you are talking about the world. Because संसार छोटा है, world is limited, but her love is unlimited. And her love is, अब मैं नहीं बोलूंगा, आपके अंदर वो बजना चाहिए. Now that's how we say, like, and in their, ये जो दोनों है ना, शिव और शक्ति, in their divine dance, it is said that Shakti stirs the universe into action, while, इसको बड़े ध्यान से सुनना, while Shiva watches lovingly, detached, yet deeply involved. जब शक्ति नाचती है ना, तो शिव उसके बड़े प्रेम से बैठ के देखता है. उसके साथ अटैच नहीं है, लेकिन इन्वॉल्व है. संसार में कैसे रहना है? गॉट द आंसर? यू आर लविंगली वॉचिंग इट. आप दृष्टा बन गए हो, आप साक्षी बन गए हो. यू आर लुकिंग एट सर्टन थिंग्स, राइट? लविंगली. ऐसा नहीं ये संसार को तोड़ो, नहीं. लविंगली लुक एट दैट, बट डिटैच्ड येट इन्वॉल्व. मतलब मैं संसार के सारे काम कर रहा हूं, अटैचमेंट किसी से नहीं है. What could you learn from these two people then? Like these two beings, these two, I don't know what to call them. मूर्ख शब्द निकल जाते हैं, उनको पीपल कह देता है कभी. मूर्ख शब्द निकल जाते हैं, कहता है कि बीइंग कहता है उन्हें. Because you cannot categorize them into one thing. So संसार में अगर रहना है तो ये एक स्टेटमेंट काफी है आपके लिए. If you realize that, again, Shakti stirs the universe into action, while Shiva watches lovingly, detached, yet deeply involved. But together they represent the ultimate truth, that all of creation is a manifestation of their love. And if you are also part of creation, you are the manifestation of their love. Who are you? If every manifestation that has happened into this creation is by all because of their love, now tell me, who are you? Now you have to say, I am their love. What else could you say? And that's what I've been shouting from the beginning itself. And somebody, again, like just 2 days ago, I was talking, they said, इस संसार में बहुत तकलीफें हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है. मैं बोला, see, understand one thing from my perspective. He asked me, like, how do you sit like this quietly, even so much of chaos around? I said, because I believe it. नो नो, बिलीव तो हम भी करते हैं, लेकिन मैं बोला, देख, मेरा जो भगवान है ना, मुझे बहुत प्यार करता है. दैट्स वाई मैं शांत बैठता हूँ. तो एक वर्ड मैंने यूज किया, आई डोंट नो वेदर आई कैन यूज इट हियर और नॉट. मैंने कहा, तेरा भगवान ना सौतेला होगा, मेरा अपना है, इसलिए तू इतना परेशान घूमता है, उसके ऊपर यकीन नहीं कर पाता. मेरा तो अपना है, वो सब कुछ देख लेगा. See, at times, in order to teach idiots, you have to become idiot. जिसको जो लैंग्वेज समझ में आता है. I know that's not the right kind of word to speak, but they were speaking in that tone. I said, okay, होगा, तेरा सौतेला, गोद लिया होगा तुझे, मेरा खुद का है, अपना हो. फिर कैसे पागलपंती की बातें कर रहे हो आप? मैं बोला, यही है, हम अपने पागलपंती में मस्त हैं, तुम अपने ज्ञान में दुखी रहो.
We will continue to be mad and happy. You continue to be intelligent and fool. और अब देखो जो संसार में ये सब सारी चीजें जो बात सुन रहे होंगे, माइट बी द पर्सन हु जस्ट अराइव्स एंड जस्ट वॉचेस दिस ऑडियो, और अगर सिर्फ इसी पार्ट को सुना, उसको क्या लगेगा, अरे क्या मूर्खता भरी बातें चल रही है यहाँ पे। हाँ, तब हमारा फेवरेट डायलॉग आएगा, राजन जी क्या था, दो पागल बैठ के समझदारी की बातें कर रहे थे, और समझदार उन्हें देख के कहते हैं कि क्या पागलपंती है। तो बताओ पागल कौन, ये जो पागल हैं जो समझदारी की बातें कर रहे हैं, या जो समझदार है इनको पागल कह रहे हैं। So whatever way, let the world be the world. I will continue to be the divine. ये मेरा चॉइस है। इसलिए एक चीज you should declare to yourself whenever you speak अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं कभी मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ, मैं दिव्यता पैदा हुआ था, मैं दिव्यता हूं और मैं दिव्यता रहूंगा। I have taken birth as the divine, I stay as divine and I will go as divine. मनुष्य पैदा होते होंगे, मैं मनुष्य नहीं हूं, आप मनुष्य नहीं हो। और ये ईगो के साथ नहीं बोलते आप, इट्स आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू स्पीक। अगर एवरीथिंग वाज देयर लव, हु टुक बर्थ दैट, देयर लव, किसका लव, डिविनिटी का, देन हु इज दैट। नाउ टेल मी इफ यू आर ह्यूमन। देखा, इसीलिए कहते दो पागल बैठ के समझदारी की बातें कर रहे हैं। अब बताओ, अगर मैं, आप किसी के साथ हो, लेट से आपके रिश्तेदारों के साथ हो, मोस्ट अमेजिंग पीपल इन दिस क्रिएशन, और तब मैं पूछूं आर यू ए ह्यूमन, और गलती से आपने कह दिया नहीं, तो बोलेंगे हमें तो पहले ही पता था, तू तो जानवर ही पैदा हुआ था। जानवर तो था ही, ये क्या स्पिरिचुअलिटी के नाम पे तू पागल जानवर बन गया। ऐसे कोई होता है तेरे जैसा, सुबह सुबह उठ के 3 बजे नहा धो के ये क्या कर रहा है बैठ के। वो कौन है, कहानी सुना रहा है, ये बैठ के 4 घंटे सुन रहे हैं। मतलब तुम लोग सच में पागल नहीं हो तो क्या हो, 4 घंटे सो जाते। किसी ने मुझे कहा कि क्वाइट सम टाइम अगो somebody asked me कि why you only sleep for this many hours। मैंने क्या किया जानते हो, मैंने उसको एक फोटो दिखाया गूगल पे, एक वर्ड लिखा रहता है RIP, है ना, रेस्ट इन पीस। मैंने कहा ये देख रहा है, बोला रेस्ट इन पीस। मैं बोला सोने के लिए बहुत समय दिया जाएगा, तब सो लेना, अब जागने दे। There will be a lot of time for you to sleep, but not now। इसलिए यहां मैं सोने नहीं आया हूं, मैं जागने आया हूं। I am not here to put that love into a dormant state. I am here to ignite that fire of that love. मैं वो शयन प्रतिमा नहीं, मैं ज्वलंत प्रतिमा हूं। That you wherever you go, आग लगा देना। I love Hanuman's part when he put that fire into Lanka। हम कहते हैं कि सत्संग हर रोज का हनुमान होना चाहिए, जो आपके मन के अंदर की लंका को जला दे। That's where I say, like, that's how the spirituality has evolved within us. And that's where I see Shiva and Shakti. And just to, in order to just look into this, if we look at into our lives also, is it not just a reflection of that cosmic love story? Because each of us carry the energy of the Shakti within.
waiting to awaken to our divine potential. मानो जैसे लक्ष्मी विष्णु की प्रतीक्षा कर रही है और पार्वती शिव का. The Shakti is waiting. The Shakti is moving. The Shakti is keeping me in this path just in order to awake that Shivatva that is hidden within me. And when you have heard all of us, I can only say, if in your life, if you feel like life is breaking you down, at times you cannot see all the things, but know that Adi Shakti is working in your favor. Even when it is hard to see, trust in her love. Because how do you know? She might be working as Mahakali to pull you out of your illusions. She might be working as Mahalakshmi to bless you with unseen abundance. Or she might just be whispering like Goddess Saraswati, guiding you towards wisdom. Because as per my understanding, her love is the silent, powerful force behind every experience that I have, every challenge that I go through, and every success that I meet, or the liberation that I seek. But in order to truly experience her love, you have to surrender. Not just to these forms of the goddess, but to the process of life itself. Always remembering, every ending is a beginning. Every tear carries the promise of a future joy. And every obstacle is a step towards greater clarity. Shakti's love is in every breath you take. If only you had the eyes to see it. The question comes, how to surrender? And what does it mean to surrender the life? No, कुछ समय पहले हमने बात किया था that although you gave me this life, although this life was a present from you to me, now I present myself to you because this is my greatest present that I can offer you. मेरा जीवन ही तेरे लिए है, मेरा जीवन ही तेरा. I come what may, come what may. Even if you throw me somewhere, I will not have any questions towards you. It's very simple. मेरे लिए बहुत सरल है, आपके लिए मुश्किल हो सकता है. Because might be you are going through that phase of life. But tell me, let me ask you a very tough question actually. For every one of us sitting here, एक tough question पूछना चाहता हूँ. क्या आप अपने भगवान को तभी मानोगे जब वो सब कुछ आपके हिसाब से करता है? तब तो ट्रांजैक्शन हो गया ना. तब तो शायद आप ये कहने लगे कि मेरी बुद्धि तेज से बड़ी है, तुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, मैं बताता हूं. Is it not? So that's where I say, in these moments of trials, जब संसार में सब कुछ सीधा नहीं चल रहा है ना, जब you hit rock bottom, वो कहते हैं ना, you hit rock bottom, मतलब उससे नीचे नहीं जा सकता. I say, even if you throw me to the rock bottom, I will find you in that rock bottom. Because that rock bottom is you, जो मुझे और नीचे गिरने नहीं देगा. You know how far I can be pushed. And thereafter, you won't push me down. I know that. वो कहते हैं ना कि the teacher took few students to the cliff of a mountain.
and asked them to jump. No one did. And then the teacher pushed one student. And when it was falling and crying, in that moment, it developed his wings and flew. उसी तरीके से जब आपको अपने जीवन में ऐसा लगे कि आपको फेंक दिया गया है, even if you have been thrown, remember one thing, it knows that you can fly. It has made you capable that you can fly. And don't worry, it will take care. आप पानी में तैर सकते हो, आप पानी में डूब सकते हो, आप संसार में तैर सकते हो, आप संसार में डूब सकते हो, आप उसके विश्वास में तैर सकते हो, उसके अविश्वास में डूब सकते हो. It's all yours. But all that I see, that I absolutely surrender in one way, कि मुझ में ज्ञान नहीं है. I don't even know what is happening. I don't even know what is going through. I am absolutely unaware. मेरी बुद्धि नहीं है, मेरी क्षमता नहीं है. मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है. I don't know. The only thing I know is I can tell you that I don't know it. बाकी जो तू करे, that's surrenderness. अब जैसे सुधा जी कहते हैं ना कि जो चाहे वो तेरा, इट्स लाइक जो तिड़बावे सो तेरा, जो तुझे पसंद हो वही हो जाए, जो तिड़बावे सो होए, जो तू चाहे वही हो जाए. बिकॉज आई डोंट नो. और ना ही मैं कभी अपना बुद्धि तेरे ऊपर प्रयोग करूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसमें क्षमता नहीं है. इट डोंट हैव दैट काइंड ऑफ, मतलब सीधी सीधी बात कहो इन ए वेरी रफ लैंग्वेज, मेरी औकात नहीं है तुझे क्वेश्चन करने की. मेरी बुद्धि उतनी सक्षम नहीं है कि तुझे जान लूं और तुझे प्रश्न कर पाऊं. ऑल दैट आई डू इज सरेंडर. बट आई नो वेदर यू आर डिस्ट्रॉइंग मी, वेदर यू आर क्रिएटिंग मी, और यू आर फिलिंग मी विथ अबंडेंस, इट्स ऑल यू. अब सोचो, किसी ने अगर आपको कुछ दिया और वो वापस ले रहा है, तो आप उसको गालियां देना चाहिए ना. यू शुड, राइट. फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपए दिए किसी को कुछ समय के लिए, और उसने कहा कि थोड़ी देर के बाद वो 100 रुपए वापस कर देगा, और आप अभी जाके वो 100 रुपए वापस ले रहे हो और वो आपको गालियां दे रहा है. व्हाट वुड यू कॉल दैट पर्सन? क्या कहोगे? भूल गए खाली हाथ आए थे और अभी चिल्ला रहे हो कि वो ये क्यों ले गया. दिया किसने था? तो चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं कमलेंद्र जी, कुछ लोग होटल खाने जाते हैं ना, वही खाना खा के प्लेट छोड़ के आना चाहिए. कुछ लोग प्लेट नहीं, वेटर को भी सर पे लेके घूम रहे, बोला ये भी मेरा. मैं लेके आया था क्योंकि होटल में मैंने खाना खाया, तो ये वेटर को भी मैं अपने साथ लेके जाऊंगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग. क्या मैंने बनाया जो मेरे हाथ से छूट जाएगा? क्या मेरा था जो मेरा नहीं रहेगा? व्हाट वाज देयर? नथिंग ना. And if you understand that nothingness, the inquisitiveness, now we travel into that meditation. Chalega, it is already 7. You have time. शायद एक छोटा स्वरूप से कर लूंगा, मुझे पता नहीं कि like how time 2 hours also went off. But still,
जो भी बैठ पाए, whoever can stay back, find a comfortable place। देखो इतना अच्छा कौन कर सकता है वो तो। आपको कहता है सोफे पे बैठ जाओ, एसी ऑन कर दो, लाइट ऑफ कर दो, थोड़ी देर सो जाओ। चले मेडिटेशन हो ना हो, शांति से 2 घंटे सो गए तो भी बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोगों को तो नींद ही नहीं आती। लोग कहते हैं ना, आप जब ना मेडिटेशन करते हो ना, मैं सो जाता हूँ। मतलब अच्छा कर रहा है, योग निद्रा हो जाई तेरी। सो इफ यू आर ऑल सेट, please just show a thumb or something to indicate that okay, you are ready. Okay, Hima Bindu ji, I saw your hands. Anyways, chalo, done. Soumya ji is still discussing with the family who will sit where. Leave the room, clear it. Okay, Batin ji, Vitika ji, Hari bhai, all ready then. Okay. मिल गया शांत वातावरण। Okay. You want to dim the light, dim the light. इफ यू वांट टू ड्रिंक वाटर, पी लो भाई। आत्मा प्यासी रह गई तो फिर बड़ी मुश्किल बात हो जाए। चलो डन। कार्तिकेय इज ऑल्सो रेडी, सो एवरीबडी इज रेडी, आई बिलीव लाइक विद दैट। देखा, उषा जी मेरी बातें मानती है। जैसे मैंने कहा पानी पी लो, पी ली। इतना अच्छा स्टूडेंट कहाँ मिलता बोलो किसी को। सो रेडी। So now the concept again, like all that you heard today, it's time to contemplate. Shravanam, Mananam, Nididhyas. Right? These are the three formulations that have been told. श्रवणम, आपने सुना। अब मननम, मतलब अब ध्यान में लेके आते वो सारे चीजें जो हमने सुना, जो सारी बातें हमने समझा, वॉट एवर वी हैव लर्न, वॉट एवर वी हैव अंडरस्टूड टुडे, उसको अपने अंदर, उसको वी विल चर्न दैट विद इन आवर ओन सेल्व्स। And in that churning, then what will happen is once we experience that part, we will bring that into our daily activities। जीवन के हर दिन में उसको उतार देना है। श्रवणम, मननम, निधिध्यास। उससे क्या हो जाएगा, वॉट एवर यू आर लर्निंग, इट बिकम्स ए परमानेंट एक्टिविटी फॉर यू। आपके जीवन का जरिया बन जाता है, दिनचर्या बन जाता है। एवरी डे एक्टिविटी, इट बिकम्स लाइक दैट। एंड नाउ जस्ट थिंक ऑफ, इफ एवरी डे एक्टिविटी इज लाइक दिस मोमेंट, बस मानो कि अगर जीवन का हर पल, हर क्षण अगर इस समय के जैसा हो जाए, अच्छा है नहीं है? नहीं तो यहीं रह जाते। मुक्त कौन होगा? दैट्स वेयर। प्यास ना लगे तो पानी कौन पिए? लेट्स डू दैट। अब इस्तेमाल करेंगे वही शक्ति जो हमें जागृत रखती है, वही शक्ति को हम शिव तक पहुंचने के लिए। टू ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, आई विल गिव अ वेरी साइंटिफिक एग्जांपल। O2 is required for the fire to burn। O2 किसका फॉर्मुलेशन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरूरी है आग को जलाए रखने के लिए। और H2O में भी ऑक्सीजन है, लेकिन वो बुझा देती है। मतलब द सेम एनर्जी is used to make the fire burn and the similar energy is used to extinguish it। वाटर में ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन तो जलाना चाहिए, बुझा क्यों देती है फिर? बिकॉज इट हैज कनेक्टेड इटसेल्फ टू अनदर एलिमेंट। सिमिलरली जो शक्ति आपको जागृत रखती है दुनिया की तरफ भागने के लिए, हम उसका फॉर्मुलेशन बदलते हैं। कैसे? थ्रू मेडिटेशन। द सेम एनर्जी now which was taking you outside will take you within। ओ हिंदी मूवी का है ना, अलीवा जी, ये सीढ़ियां ऊपर भी जाती है, यही सीढ़ियां नीचे आती है।
सो यही शक्ति है जो आपको वहां लेके जाती है, वही शक्ति जो यहां रख देती है। तो क्लोज योर आइज। And all that I want to do is just look into darkness. जितने अंधकार को देख सकते हो उतने अंधकार को देखना, as darkness as possible. लोग कहते हैं मेडिटेशन में तो लाइट दिखना चाहिए, हम बोलते देखेंगे। हाउ वुड यू नो लाइट विदाउट डार्कनेस? So all that you should see, or even if you are imagining, all that you should imagine is a dark space. You are just looking stark into the darkness. ऐसा अंधकार जहां आपको अपना हाथ दिखाई ना दे, ऐसा अंधकार जहां आप अपने आप को ना देख पाओ, दैट डार्कनेस। Can you see, when you are seeking darkness, light is automatically flickering. There is a flickering of light happening automatically. आप जितने अंधकार को देखने की कोशिश कर रहे हो उसमें से उजाला कहीं ना कहीं छलक आएगा। But your focus should be on the darkness, not onto the light. Mind you, darkness is not bad. क्या मैं कह सकता हूं कि रात खराब है, दिन अच्छा है? So absolutely looking into that space of darkness. We will start with the worldly things. जब आप ये गहरे अंधकार को देख रहे हो, when you are looking into this darkness of life, in this moment, think of all the things that have happened in your life and that is so dark. आपके जीवन में ऐसे घटनाएं घटित हो चुके जो कि सच में आप परेशान हो जाते हो उसके बारे में सोच के, like a darkness in life. But when this darkness of life is continuing, you bring out everything since your childhood, whatever you remember. It might be very latest and it might be very, very past. उस चीज को एक बार सोचो जिसको सोच के ही आप परेशान हो जाते हो। Like the darkness that you are seeing. उसको उस अंधकार की तरह मानो जहां आप अपने आप को नहीं देख पाते, अपने भगवान को क्या देखोगे? That kind of darkness. ऐसे जगह जहां आप अटक गए हो, ऐसी जगह जगह जहां आप भटक गए हो, the places where you have gotten stuck, the places where you have deviated the path, the places that paused you, the places that actually threw you into unknown territory, अज्ञातवास में छोड़ दिया गया है। Think of everything. A place where you don't have even faith and belief. ऐसा कैसे हो सकता है? Pretty intense space. But hold on. ये मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? वैसा क्यों हुआ? All that you are thinking of. Why this happened? How this happened? Why to me? When you are there in this space, do you feel really connected? Do you really feel good within you? No. Because there is a lot of questions that are hiding. There are a lot of situations that you have not spoken of.
There are things that you never tell anyone. The pain that you have, को कहते हैं ना, जो मन की जो पीड़ा है, जो आप कभी किसी को बता नहीं पाए, ना ही बता पाओगे, बिकॉज यू नो कि अगर आपने बता भी दिया तो कोई समझ नहीं पाएगा. थिंक ऑफ द पीपल दोज हु नेवर अंडरस्टूड यू. उन्होंने कभी आपको समझा ही नहीं, जिन्होंने आपके अंदर की अच्छाई को जाना ही नहीं. दे नेवर न्यू योर गुडनेस. थिंक ऑफ देम दोज हु हैव ऑलवेज ब्लेम्ड यू. Think of those people, those who have never believed in you. Pretty sorrowful state. Take your time. Think all that you can think. अपने बुद्धि के रक्त बीज को जागृत करो. So that all the thoughts that you have ever had have multiplied now. Things that you have given up. ऐसी चीजें जिसको आपने छोड़ दिया, ये सोच के कुछ नहीं हो सकता इसका. It might be a pain in your body. It might be a pain in the relationship. It might be something related to this world. Or even it might be a complaint against your God. कि तू तो कभी मुझसे मिलता नहीं है, कि तू कभी मुझसे बात नहीं करता, कि तूने मुझसे अपने आप से अलग कर दिया है, तू मुझे भूल गया है. So all these aspects of life when we are speaking of, these are not easy things. But my question now is, are you breathing? Take a breath. मर नहीं गए अभी तक. चाहे लोगों ने आपके साथ क्या किया है, चाहे परिस्थिति ने आपके साथ क्या किया है, चाहे आपके साथ कुछ भी हो गया हो, चाहे आपने किसी को बताया या नहीं बताया हो, जो कुछ भी हुआ है आज तक आपके साथ, यू आर स्टिल ब्रीदिंग. Why are you still breathing? There might have been situation where you thought like, let me stop this breath. But why are you still breathing? It's very simple. The world has hated me. I am breathing because of her love. चाहे संसार ने मुझे ठुकरा दिया हो, उसने मुझे अपना लिया है. That's why I breathe. And I know her promise. कि कभी कभी मन होता है कि मैं भाग के चला जाऊं और तुझ में समा जाऊं, so that there is no drama left of me. और वो तब कहती है, wait, there would be a disbalance. तू मुझ में समा ना पाए तो क्या हुआ, मैं तुझ में समा जाता हूं. Even if you cannot merge in me, let me merge in you. And in this moment of all your chaos that your mind has created, all the sad stories that you have lived in your life, all the, क्या कहते हैं, धोखे खाए ना आपने जो,
bring that all together. And in this moment, I'm going to tell something. Listen to it with your closed eyes and we'll continue. अगर आपने धोखे खाए हैं, वही तो कहते हैं धोखे ही खाना चाहिए। बिना धोए खाओगे तो पेट खराब होगा, और अगर आपने धोखे खाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। Now, in this moment of all the chaos that you have gone through, this moment become that small little गोल मटोल cute little अघोरी। अघोरी कौन? जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए स्मशान और मंदिर एक। You become that little अघोरी who is free of all the clutters and pleasures of life. उस छोटे से बच्चे की तरह बैठ जाओ। Now tear that darkness apart and see the light. मानो जैसे एक पर्दा को बीच में किसी ने ऐसे फाड़ दिया हो ना, you will tear this apart and see the light that is there. And you sit as that small little अघोरी। Who is not just sitting, who is basking in the love of the divine. उसके ऊपर जो रोशनी गिरती है ना, वो रोशनी से मानो वो दिव्य आत्मा आपको, आपके शरीर को स्नान करा दे रही है। इट इज बेदिंग यू विथ इट्स डिविनिटी। इट इज, कहते हैं ना, जैसे मतलब मानो जैसे आप बारिश में चले जाओ और वो पूरा भिगा देता है। ड्रेंच योर सेल्फ विथ दैट लव ऑफ डिविनिटी, विथ ओनली वन सेइंग, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट आई ट्रस्ट यू। आई डोंट नो बट आई ट्रस्ट यू। Let me ask you the question. Do you trust it? क्या आप उस पर भरोसा करते हो? If you trust it, in your imagination, lie down. And the moment you lie down, you will find the lap of the goddess to sleep. कितनी सुंदर जगह। जैसे ही आप उसके गोद में सर ले रख के लेट जाते हो, just like when I take a nap, I just lie down in the lap of her. And she is so benevolent that she appears immediately, putting her hand on my head and caressing my hair. मेरे सर के ऊपर अपना हाथ रख के धीरे धीरे वो सहलाती है और कहती है कि डोंट वरी, आई एम स्टिल देयर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई विल नॉट गो एनीवेयर, कम व्हाट मे। कुछ भी हो जाए, मैं तो छोड़ के नहीं जा रही। कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तेरे साथ ही रहूंगा, विदाउट एनी कंडीशन, एब्सोल्युटली अनकंडीशनली। चाहे तू मुझे प्रश्न कर,
चाहे कभी कभी अविश्वास हो जाए तुझे, बट आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। हाँ, मैं कभी कभी शांत हो जा सकती हूँ, एंड इन दोज मोमेंट आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन साइलेंस, फॉर यू टू रियलाइज that I'm always there in every moment, and that assurance that everything will be taken care of. Drench in that assurance. उस दिव्यता में भीग जाओ। Tell her that you don't know, आपको पता नहीं है। Tell that you don't have the intelligence to even know it. Just surrender into that space and sleep. एक ऐसी शांत वातावरण की निद्रा where everything is devoid. सारी बाधाएं, सारी चिंताएं, एवरीथिंग vanishes. Even you vanish. Absolute stillness. And in this stillness, all your pains, all your queries, all your doubts slowly, slowly vanish. Once the cleansing has happened, and slowly let go of the heaviness of your heart. धीरे धीरे करके सांसें, धीमी सांसें लेते रहो, और आपका हृदय जो है वो अपने आप हल्का होते चला जाएगा. इट विल बिकम लाइटर ऑन इट्स ओन. Now, when you are lying down in the lap of the goddess with the assurance that everything is taken care of, bring the smile of a child on your face.
Absolute stillness. You are in deep, deep, deep contemplation with your own self. While relaxing into your own self, experience how the divine is dancing within you through your breath. Feel the connection with the divine as if you are surrounded by it from outside and within. Whatever you have heard today, remember those.
remembering her love is infinite. Her love is you. Trust in her love. Remember that Shakti stirs the universe into action while Shiva watches lovingly, detached yet deeply involved. Similarly, all the things of your life, you are detached with it. And you have to feel that every fabric of the creation is she only. It is the goddess. In every particle of the cosmos, in every breath you take, it is the all encompassing love of Goddess Adi Shakti that vibrates through creation, destruction, and rebirth, while remembering her love is not passive, it's active. Although it is fierce, still it is enlightening for all of us. Remember the promise. If you cannot merge in it now, allow it to merge in you. And with this, with the allowance of this divinity that is breathing in you, bring that smile onto the face, realizing that is always walking with you as you.
And with that smile on your face, take a breath, realizing that it is running towards you. And when you feel it, your heart fills up, and slowly you let it go to come back to you again. And this is the love story happening now between Shakti and Shiva, and you are both. With the confidence, with the clarity that it will take care of everything. And it is not only for this worldly things. Our preparation is not for the world. Our preparation is for the divine. And in whichever way it wants to prepare us, we are ready. With this, think of all the best things of your life that has happened to you. If she has worked in the destructive ways, she must have worked in the creative manner as well. Think of all the small little happinesses that you have. Think of all the amazing things that ever happened to you. Think of the things that were given to you even without asking. Think of the things that make you who you are. Think of the things when people believed you. Think of the things where they look at you as a guiding force. Think of the things when you absolutely felt divine. You felt the embrace of the divinity. While thinking about all the good things that have happened ever to you, that is also her doing. But the thing is, even I don't know. But all that I know is she will take care. With this belief and faith within me, with this pledge within me, I continue the journey of the world, yet towards my home. Just like Shiva watches the dance of Shakti happily, I watch the dance of the world happily, detached, yet involved. That is how. May you all learn the art of the divine dance. May you all learn the art of that divine love. May you all be part of it. And as my final words go, to truly feel her love, you must surrender. Not just to the forms, but to the process of life itself. Remembering every ending is a new beginning. Every tear carries the promise of the future.
and every obstacle is a step towards greater clarity. Just like you have taken so many births, and every birth was preparing you to reach back to your home. Make it that this birth is the last. Because Shakti's love, I understand it now. Shakti's love is in every breath you take. If only you have the eyes to see it. And as I said, her love is infinite. Her love is you. Fill your heart with that happiness, fill your heart with that love, and then take a deep breath and slowly exhale as if you are filling yourself with all that positivity and love and letting go of all the things that is no more needed in your life. Take a few deep breaths and exhale it through your mouth slowly, bringing you back into the consciousness of this space, of this realm, from the darkness of life to the light of life, to the aspect of complete surrenderness, belief, and giving the entire string of your life in the hands of the divine. And realizing that you are also the same. Aham Brahmasmi Tattvamasi. Take your time to open your eyes. Whenever you are ready to see the dance of the world, smilingly, detached, yet involved. 43 minutes. And people keep on asking me, how does time pass so fast when we are in satsang? I say because the secret is in that word itself, satsang. The moment when you are with truth, time does not exist because truth is beyond time. Satyam Shivam Sundaram. So when you are along with truth, you feel the vibrations of Shiva. That's why Satyam Shivam. And when you are with truth and you look like Shiva, by default, आप सुंदर हो जाते हो. चेहरा देख लेना जाके, चीज समझ में आएगा. You'll come to that realization that how beautiful you are. I am not beautiful because of my looks. I am beautiful because I'm divine. Okay? So thank you so much for your time, your efforts, and allowing me to speak. But it is not about the words. It's about the words that will hit you when I close this session. It will be the words that will be whispering in your ears without language. It is a deep contemplation that you will have when you are sitting alone and no one is there. Remembering, when you speak, it listens. And when it speaks, you dive into meditation. Looks like Diwali to me within. Thank you so much. Till we meet again, keep shining like this in whichever way she has acted in your life.
trust, believe, have that faith. Be that divine. Stay that divine. Thank you so much. Aham Brahmasmi. Tattvamasi. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।